Hi! Today we will make multigrain flour. आज हम मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं. First we will use ragi finger millet 250 grams. Second, jaw barley 500 grams. Third, makka maize 500 grams. Fourth, moong green gram 500 grams. Fifth, jowar sorghum 500 grams. Sixth, chana atta chickpea flour 500 grams. Seventh, bajra per millet 500 grams. Eighth, soybean 250 grams. Ninth, dalchini cinnamon 50 grams. 10th, methi fenugreek 50 grams. These are our 10 flours. We are going to mix them. Ragi finger millet. Jowar sorghum. चने का आटा चिकपी फ्लोर. जौ barley. मक्का maize. बाजरा per millet. सोयाबीन. मूंग आटा ग्रीन ग्राम. दालचीनी cinnamon. Methi fenugreek. Now we will mix all these flour. अब हम इन सारे आटों को अच्छे से मिलाएंगे. Now for making chapati dough, we will use 1 cup of this multigrain flour and 2 cups of wheat flour. अब रोटी बनाने के लिए इस मल्टीग्रेन आटे को 1 कप मल्टीग्रेन आटा और 2 कप गेहूं का आटा मिक्स करके चपाती बनाएंगे. Thank you for watching.